नमस्कार दोस्तों, मेटलर्जी क्यूएनए में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर एक नया अपडेट आपके पास पहुंचता रहे। और दोस्तों, अपना फ्रेंड या बंधु के साथ अवश्य शेयर करें ताकि उसका भी हेल्प हो सके इस वीडियो के ज़रिए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में फिजिकल मेटलर्जी का सेकेंड पार्ट लेके आए हैं और यहाँ आज लगभग 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कॉपर 0.2 to 0.5% when added to steel increase resistance to acid corrosion, increase resistance to atmospheric corrosion, act as a strengthening agent या डी बोथ बी एंड सी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। कॉपर 0.2 to 0.5% when added to steel, बी increase resistance to atmospheric corrosion, act as a strengthening agent। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। नेक्स्ट, बोरॉन इन स्टील इंक्रीज इट्स कोरोशन रेसिस्टेंस या हार्डनेबिलिटी या वेल्डेबिलिटी या इम्पैक्ट रेसिस्टेंस। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हार्डनेबिलिटी। बोरॉन इन स्टील इंक्रीज इट्स हार्डनेबिलिटी। नेक्स्ट, addition of aluminium to steel act as a deoxidizer, produces fine austenite grain size, helps promoting nitriding if present up to 1% या डी ऑल ABC। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ऑल ABC। Addition of aluminium to steel act as a deoxidizer, produce fine austenite grain size, help promoting nitriding if present up to 1%। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ कोबाल्ट टू स्टील contribute to red hardness by hardening ferrite, increase corrosion resistance, increase weldability या none of these। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। एडिशन ऑफ कोबाल्ट टू स्टील contribute to red hardness by hardening ferrite। Next, addition of chromium 0.15 to 1% to cast iron increase its wear resistance या resistance to hard heat या machinability या hardness and strength। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, machinability। Addition of chromium to cast iron decrease its machinability। Next, silicon in steel improves oxidation resistance या strengthen low alloy steel या act as a deoxidizer या all ABC। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव। सिलिकॉन इन स्टील improve oxidation resistance, strengthens low alloy steel, act as a deoxidizer, all of above। Next, addition of copper 0.5 to 2% in cast iron assists in control of child depth या toughness and strengthness the matrix या increase fluidity या डी ऑल ABC। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑल ऑफ एबव, ऑप्शन डी। एडिशन ऑफ कॉपर 0.5 to 2% in cast iron assists in control of chill depth, toughness and strengthness the matrix, increase fluidity, all of above। Next, titanium in steel causes localized depletion of chromium in stainless steel during long heating, accelerates
formation of austenite in high chromium steel, yeah, reduce martensite hardness and hardenability in medium chromium steel या none of these. इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। Titanium in steel reduce martensitic hardness and hardenability in medium chromium steel. Next, molybdenum addition 0.0 to 1% to cast iron improve tensile strength, hardness, heat resistance and fatigue strength, yeah, retard the transformation of austenite and thus increase hardenability and freedom from cracking and distortion, yeah, C, refine the graphite and perlite, या डी और ABC। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। Molybdenum addition 0.0 to 1% to cast iron improve tensile strength, hardness, heat resistance and fatigue strength. B, retards the transformation of austenite and thus increase hardenability and freedom from cracking and distortion. C, refine the graphite and perlite। इसका सही आंसर है all of above। Next, vanadium addition 0.15 to 0.5% to cast iron improve tensile strength, hardness and resistance to wear and heat, yeah, promotes carbide formation and reduce graphitization, yeah, stabilizes cement and improve the structure of the chill, या डी ऑल ऑफ above। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ above। Vanadium addition 0.15 to 0.5% to cast iron, yeah, improve tensile strength, hardness and resistance to wear and heat, promotes carbide formation and produce graphitization, stabilizes cement and improve the structure of the child। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ above। नेक्स्ट, nickel addition 0.1 to 3% to cast iron refine perlite and graphite and stabilizes austenite, yeah, improve toughness and density of casting, yeah, minimize stream of hardness between light and heavy section, yeah, all of above। इसका सही आंसर है all of above। nickel addition 0.1 to 3% to cast iron refine perlite and graphite and stabilizes austenite, improve toughness and density of cast iron, minimize streams of hardness between light and heavy section, all of above। Next, magnesium addition 0.04 to 0.08% to cast iron increase its corrosion resistance, या ductility, या hardness, या heat resistance। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डक्टिलिटी। मैग्नीशियम एडिशन 0.04 to 0.08% टू कास्ट आयरन इंक्रीजेस इट्स डक्टिलिटी। नेक्स्ट, मैग्नीज एडिशन 0.3 to 1.25% to cast iron stabilizes austenite and refine the graphite and perlite, या act as a deoxidizer, या increases fluidity and डेंसिटी इन कास्टिंग्स, या ऑल ऑफ अबव। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ अबव, ऑप्शन डी। मैग्नीज एडिशन 0.3 to 1.25% टू कास्ट आयरन stabilizes austenite and refine the graphite and perlite, सी एक्ट एज ए deoxidizer, या increase fluidity and density in casting। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट, zirconium addition 0.1 to 0.3% to cast iron reduce the hardness, fluidity and density of casting, या formation of graphite, या none of these। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, हार्डनेस। zirconium addition 0.1 to 0.3% to cast iron reduce the hardness, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, TTT time temperature transformation diagram is also known as S curve or C curve,
बेंस कर्व, आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम या ऑल एबीसी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। TTT, time temperature transformation diagram, is also known as S curve or C curve, Benz curve, isothermal transformation diagram, all of above. Next, TTT diagram is used more particularly for the assessment of decomposition of austenite in a heat treatable steel. Yeah, knowing the extent of austenite decomposition under equilibrium condition. Yeah, C, knowing the phases and resulting microstructure corresponding to equilibrium condition या none of these। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। TTT diagram is used more particularly for the assessment of decomposition and austenite in a heat treatable steel. Next, the fine austenite grain size in steel increase the hardenability, impact toughness या increase resist strength या rough machinability। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। The fine austenite grain size in steel increase the impact toughness. Next, the coarse austenite grain size in steel improve machining finishes, yeah, improve tensile strength as normalized, yeah, mitigate quenching crack distortion in quenching and surface decarbonization या none of these। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, improve tensile strength as normalized। The coarse austenite grain size in steel improve tensile strength as normalized। Next, austenite grain size in steel affect its hardening response या fabrication properties या both A and B या nor A neither B, neither A nor B। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, both A and B। Austenite grain size in steel affect its hardening response या fabrication properties both B and C। Next, addition of deoxidizers like ferrosilicon, aluminum, etc. to molten steel does not reduce its FeO content या promote fine grain formation या kill, that is eliminate dissolved gases it या none of these। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, none of these। Addition of deoxidizer like ferrosilicon, aluminum, etc. to molten steel does not reduce its FeO content, produced fine grain formation, kill, that is eliminate dissolved gases it या none of these। इसका सही आंसर है none of these। Next, in alloy steel which element is added to achieve fine grain structure and to avoid grain growth at high temperature। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, वेनाडियम। क्या हो रहा है, in alloy steel which element is added to achieve fine grain structure and avoid grain growth at high temperature। इसका सही आंसर है वेनाडियम। Next, a one steel is characterized by the presence of brittle iron oxide film या fine grain size या glossy and smooth surface या darkening of the surface। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, presence of brittle iron oxide film। A one steel is characterized by the presence of brittle iron oxide films। Next, which of the following is not a metal heat treatment process? Miraging, ostempering, quenching, hardening या colorizing। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, colorizing। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, colorizing। सॉरी, which of the following is not a metal heat treatment process? Miraging,
ऑस्टेम्परिंग, क्वेंचिंग या कैलोराइजिंग। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कैलोराइजिंग। नेक्स्ट, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑफ मेटल कैन नॉट इम्प्रूव इट्स डक्टिलिटी, टफनेस, कोरोशन रेसिस्टेंस, हार्डनेस या स्ट्रेंथ या ग्रेन साइज या इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज या नन ऑफ देज। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ देज। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑफ मेटल कैन नॉट इम्प्रूव इट्स डक्टिलिटी, टफनेस, कोरोशन रेसिस्टेंस, हार्डनेस या स्ट्रेंथ, बी ग्रेन साइज, सी इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज या डी नन ऑफ देज। इसका सही आंसर है नन ऑफ देज। नेक्स्ट, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट pertaining to heat treatment process of steel. Number A, heat treatment process for steel basically involve decomposition or transformation of austenite. B, shallow cooling from above the critical range in steel produce a perlite soft structure. Yeah. C, rapid cooling from above the critical range in steel produce a martensitic structure. इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। फिगर आउट द करेक्ट स्टेटमेंट pertaining to heat treatment process of steel. A, heat treatment process for steel basically involve decomposition या transformation of austenite. B, slow cooling from above the critical range in steel produced a perlite structure. C, rapid cooling from above the critical range in steel produced a martensitic structure. इसका सही आंसर all of above. Next, spurious annealing of steel compared to normal annealing produced steel with lower. इसका सही आंसर है ऑप्शन A, hardness and tensile strength. Spurious annealing of steel compared to normal annealing produce steel with lower hardness and tensile strength. Next, in case of full annealing, the austenizing temperature for hypoeutectoid steel is in the range of degree centigrade. इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन A, 723 to 910 degree centigrade. In case of full annealing, the austenizing temperature for hypoeutectoid steel is in the range of 723 to 910 degree centigrade. Next, the austenizing temperature of hypereutectoid steel in case of full annealing is in the range of degree centigrade. इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 723 to 1130 degree centigrade. The austenizing temperature of hypereutectoid steel in case of full annealing is in the range of 723 से 1130 डिग्री सेंटीग्रेड. नेक्स्ट है दोस्तों, फुल एनीलिंग ऑफ स्टील डज नॉट इम्प्रूव इट्स फॉर्मेबिलिटी, मेशनेबिलिटी, हार्डनेस या नन ऑफ दिस. इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हार्डनेस. Full annealing of steel does not improve its hardness. Next, normalizing produce microstructure consisting of perlite steel for eutectoid and cementite for hypereutectoid and ferrite for hypoeutectoid या डी all of above. इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, all of above. Normalizing produce microstructure consisting of perlite for eutectoid steel and cementite for hypereutectoid and ferrite for hypoeutectoid steel. इसका सही आंसर है all of above. Next, normalizing ये produce harder and stronger steel than full annealing, eliminate the carbide network at the grain boundaries of hypereutectoid steel या produce enough strength and ductility in a steel that is too soft and ductile for machining या डी all ABC. इसका सही आंसर है all of above. Normalizing produce harder and stronger steel than full annealing,
eliminates the carbide network at the grain boundaries of hyper-eutectoid steel. C produces enough strength and ductility in a steel that is too soft and ductile for machining. इसका सही आंसर है all of above. Quench hardening of steels require the formation of martensite, followed by tempering developed the best combination of strength and notch ductility. Yeah, achieved maximum percentage increase of hardness if they contain 0.35 to 0.60 कार्बन या ऑल एबीसी. इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव. Quenching hardening of steel require the formation of martensite followed by tempering depends to best combination of strength and notch ductility. C achieved maximum percentage increase of hardness if they contain 0.35 to 0.60% carbon. All of above. इसका सही आंसर है all of above. Next, the degree of hardness produced in steel by its quench hardening depends upon the a rate of cooling या quenching temperature या nature of properties of quenching medium या D all of above. इसका सही आंसर है ऑप्शन डी all of above. The degree of hardness. The degree of hardness produced in steel by its quench hardening depends upon the rate of cooling, quenching temperature, nature and properties of quenching medium all of above. Next है दोस्तों, the purpose of tempering is to produce A residual stress and percentage elongation, B ductility and toughness, C hardness, D none of these. इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हार्डनेस. The purpose of tempering is to reduce hardness. टेम्परिंग का मेन पर्पस है हार्डनेस को रिड्यूस करना. नेक्स्ट है दोस्तों, quench hardening of steel is usually followed by its tempering because the quench hardened steel are brittle, hard and highly stress, liable to crack and distort, liable to dimensional changes due to some retained austenite, unstable phase या all ABC. इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव. Quench hardening of steel is usually followed by its tempering because the quench hardened steel are brittle, hard and highly stressed. B liable to crack and distort. C liable to dimensional changes due to some retained austenite, unstable phase. All of above. इसका सही आंसर है all of above. लो टेम्परेचर टेम्परिंग इज डन एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड. इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 150 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड. लो टेम्परेचर टेम्परिंग इज डन एट 150 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड. नेक्स्ट, हाई टेम्परेचर टेम्परिंग इज डन एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड. इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 500 से 650 डिग्री सेंटीग्रेड. हाई टेम्परेचर टेम्परिंग इज डन एट 500 से 650 डिग्री सेंटीग्रेड. नेक्स्ट, हाई टेम्परेचर टेम्परिंग imparts high ductility without reducing hardness. Developed a martensite structure is used for components like annealing, connecting rods, charts, gears etc. या developed at ट्रूसाइट स्ट्रक्चर. इसका सही आंसर है ऑप्शन सी. हाई टेम्परेचर टेम्परिंग इज यूज्ड फॉर कंपोनेंट लाइक कनेक्टिंग रॉड, चार्ट्स, गियर्स एक्सेट्रा. नेक्स्ट, martenpering of steel employ two-stage quenching
fast rapid cooling in salt bath, and then slower air cooling. B. Produces martensite structure with a high stress and distortion. C. Decreased ductility. या D is suitable for very large section. इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए. Martempering of steel employs two-stage quenching, fast rapid cooling in salt bath, and then slower air cooling. Next, ostempering of steel employ interrupt quenching is a hardening treatment, can be done for very large section या none of these. इसका सही आंसर है ऑप्शन ए. employ interrupt quenching. नेक्स्ट है दोस्तों द स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड बाय ostempering ऑफ स्टील इज बेनाइट, मार्टेनसाइट, प्रूसाइट या ऑस्टेनाइट. इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बेनाइट. इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए. द स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड बाय ostempering ऑफ स्टील इज बेनाइट. नेक्स्ट, mirroring steel at an ultra high strength on being aged in martensite condition, have good machinability and weldability, are used in aircraft in the structural parts, refill tubing, hot extrusion dies etc. इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव. mirroring steels at an ultra high strength at being as in martensitic condition, B. have good machinability and weldability, are used in aircraft structural parts, refill tubing, hot extrusion die etc. Next is the martensite in mirroring steel compared to that in conventional low alloy steel is softer, tougher, having low work hardening rate, facilitating cold working to a higher degree या डी ऑल ऑफ अबव. इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल एबीसी. द martensite in mirroring steel compared to that in conventional low alloy steel is softer, tougher, having low work hardening rate, facilitating cold working to a higher degree. Next, which of the following alloying element does not increase the hardenability of steel? मैंगनीज, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट या वेनेडियम. इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कोबाल्ट. Which of the following alloying element does not increase the hardenability of steel? इसका सही आंसर है कोबाल्ट. Next, which is the most frequently applied method of the heat treatment for grey cast iron? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्ट्रेस रिलीविंग. Which is the most frequently applied method of the heat treatment for grey cast iron? इसका सही आंसर है स्ट्रेस रिलीविंग. नेक्स्ट, softening of high speed steel is done by annealing at dash degree centigrade. इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 850 डिग्री सेंटीग्रेड. softening of high speed steel is done by annealing at 850 डिग्री सेंटीग्रेड. next, hardening temperature for high speed steel is dash degree centigrade. इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1150 से 1350 डिग्री सेंटीग्रेड. हार्डनिंग टेम्परेचर फॉर हाई स्पीड स्टील इज 1150 से 1350 डिग्री सेंटीग्रेड दोस्तों. नेक्स्ट, सेकेंडरी हार्डनिंग ऑफ हाई स्पीड स्टील दैट इज इंक्रीज इन हार्डनेस ऑफ टेम्परिंग बियॉन्ड 400 डिग्री सेंटीग्रेड इज ड्यू टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ comparatively softer written austenite into martensite या precipitation of carbide from the martensite called
प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग, या सी बोथ ए एंड बी, या नेदर ए नॉर बी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। Secondary hardening of high speed steel, that is increase in hardness of tempering beyond 400 degrees centigrade, is due to the transformation of comparatively softer written austenite into martensite. B. Precipitation of carbide from the martensite called precipitation hardening. इसका सही आंसर है both B, A and B. Next is, which of the following type of stainless steel can only be hardened by heat treatment? Martensite, ferrite, austenite, या none of these? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए martensite। क्या बोल रहा है? Which of the following type of stainless steel can only be hardened by heat treatment? इसका सही आंसर है martensite। Next, which type of stainless steel has the highest corrosion resistance? मार्टेंसाइटिक, फेराइटिक, ऑस्टेनाइटिक, या लो क्रोमियम? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी ऑस्टेनाइटिक। व्हिच टाइप ऑफ स्टेनलेस स्टील हैज़ द हाईएस्ट कोरोजन रेसिस्टेंस? ऑस्टेनाइटिक। नेक्स्ट इज, ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील इज मैग्नेटिक इन एनिल कंडीशन, hardenable only by cold working, hardenable by heat treatment also, या none, not able to hot work readily? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी hardenable only by cold working। Austenitic stainless steel is hardenable only by cold working। Next is, which stainless steel is magnetic in an anneal condition? Austenitic, ferritic, martensitic, या none of these? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऑस्टेनाइटिक। क्या बोल रहा है? व्हिच स्टेनलेस स्टील इज मैग्नेटिक इन एनिल कंडीशन? इसका सही आंसर है ऑस्टेनाइटिक। नेक्स्ट, फेराइटिक स्टेनलेस स्टील आर सुपीरियर टू मार्टेनसाइटिक स्टेनलेस स्टील इन कोरोजन रेसिस्टेंस, मेसिनेबिलिटी, बोथ ए एंड बी, या नेदर ए नॉर बी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। Ferritic stainless steel are superior to martensitic stainless steel in corrosion resistance or machinability. Both B and C and B. Which stainless steel has the highest thermal conductivity? Austenitic, ferritic, martensitic, या all have equal value? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मार्टेनसाइटिक। क्या बोल रहा है? व्हिच स्टेनलेस स्टील हैज़ द हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी? इसका सही आंसर है मार्टेनसाइटिक। नेक्स्ट, मार्टेनसाइटिक स्टेनलेस स्टील इज द ओनली टाइप ऑफ स्टेनलेस स्टील व्हिच इज हार्डनेबल बाय हीट ट्रीटमेंट बिकॉज ऑफ इट्स हायर कार्बन टू क्रोमियम रेशियो, लोअर कार्बन टू क्रोमियम रेशियो, या हायर थर्मल कंडक्टिविटी, या मैग्नेटिक स्ट्रक्चर, मैग्नेटिक नेचर? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मार्टेनसाइटिक स्टेनलेस स्टील इज द ओनली टाइप ऑफ स्टेनलेस स्टील व्हिच इज हार्डनेबल बाय हीट ट्रीटमेंट बिकॉज ऑफ इट्स higher carbon to chromium ratio. Next is, higher tempering temperature in tempering of stainless steel causes increase in its hardness, yield strength and tensile strength, या elongation and impact strength, या all of above? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी elongation and impact strength। Higher tempering temperature in tempering of stainless steel causes increase in its elongation and impact strength. Next is, case hardening of a steel part which require a hardened wear resistant surface called the case and a relatively soft
soft, tough, and shock-resistant core can be done by carburizing or nitriding, cyaniding or carbonitriding, या सी फ्लेम हार्डनिंग और इंडक्शन हार्डनिंग, या डी ऑल एबीसी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी ऑल एबीसी। केज हार्डनिंग ऑफ ए स्टील पार्ट which require a hard wear resistant surface called the cage and a relatively soft, tough and shock resistant core can be done by carburizing or nitriding, cyaniding or carbonitriding, flame hardening or induction hardening, all ABC। इसका सही आंसर है all of above। Next, carburizing, also called cementation of low carbon steel part, increase the carbon content at the surface by absorption of diffusion V is done at 870 से 925 डिग्री सेंटीग्रेड। यह इज ए केज हार्डनिंग प्रोसेस या ऑल एबीसी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट इज carburizing medium in pig carburizing is use fused salt, bone charcoal, hydrocarbon gases या none of these। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी bone charcoal। Carburizing medium in pig carburizing is a bone charcoal। Next is which of the following cage hardening process for steel produce a hard cage without quenching or any further heat treatment, या nitriding, pig carburizing, liquid carburizing या gas carburizing। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए nitriding। which of the following cage hardening process for steel produce a hard cage without quenching or any further heat treatment। इसका सही आंसर है nitriding। Next is nitriding process cage hardness Vickers pyramid number of the order of। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1150 डिग्री सेंटीग्रेड। 1150 डिग्री सेंटीग्रेड। Nitriding produce cage hardness of the order of 1150 डिग्री सेंटीग्रेड। Next, pick out the correct statement pertaining to advantages of nitriding। Since nitride parts are not quenched, this minimizes the distortion or cracking। B, no machining is required after nitriding। C, where in a carburized parts hardness begins to fall at 200 डिग्री सेंटीग्रेड, at nitrided part retain hardness up to 500 डिग्री सेंटीग्रेड, या डी ऑल ऑफ अबव। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट पर्सनिंग टू एडवांटेज ऑफ नाइट्राइडिंग। यहाँ बोल रहा है दोस्तों नाइट्राइडिंग का एडवांटेज क्या क्या है। ऑप्शन ए, सिंस नाइट्राइडिंग पार्ट्स आर नॉट क्वेंच्ड दिस मिनिमाइज द डिस्टोर्शन और cracking। B, no machining is required after nitriding, whereas in a carburized part hardness beginning to fall at 200 degree centigrade, at nitrided parts stainless retain hardness up to 500 degree centigrade। इसका सही आंसर है all of above। Next is pick out the correct statement pertaining to nitriding। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, the cage of nitrided parts is brittle। Pick out the correct statement pertaining to nitriding। The cage of nitrided part is brittle। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, in cyaniding, option A, carbon and nitrogen are introduced into the surface of steel and then it is quenched hardened। B, cage depth is about 10 millimeter।
सी डिस्टोर्शन डज नॉट occur ड्यूरिंग हीट ट्रीटमेंट, या डी मोल्टेन पोटेशियम साइनाइड बथ इज यूज्ड। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, कार्बन एंड नाइट्रोजन आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सरफेस ऑफ स्टील एंड देन इट इज quenched hardened. Next, low carbon steel C is equals to 0.2% when subjected to cyaniding is heated in the cyanide bath to a temperature of -degree centigrade. इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 450 से 620 डिग्री सेंटीग्रेड। लो कार्बन स्टील when subjected to cyaniding is heated in the cyanide bath to a temperature of 450 से 620 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट, कार्बोनाइट्राइडिंग ए प्रोड्यूस gases surface containing both carbon and nitrogen by the use of gas like hydrogen, carbon monoxide and NH3 atmosphere. B is used for cause hardening of high speed steel. C of steel produces high distortion. या D of steel produces extremely high dimensional changes. इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, कार्बोनाइट्राइडिंग प्रोड्यूसेस गैस surface containing both carbon and nitrogen by the use of gas like hydrocarbon, carbon monoxide and NH3 atmosphere. Next is carrier gas used in carbonaitriding process is a mixture of N2H2 and CO, C3H8 and C4H10, या C3H8 and NH3, या CO and NH3। इसका सही आंसर है ऑप्शन एम, N2H2 and CO. Carrier gas used in carbonaitriding process is a mixture of N2H2 and CO. Next is carbonaitriding is carried out for low carbon steel. C is equals to 0.2% at 10 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 845 डिग्री सेंटीग्रेड। कार्बोनाइट्राइडिंग इज कैरिड आउट फॉर लो कार्बन स्टील एट 845 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट इज एक्टिव गैस इन कार्बोनाइट्राइडिंग प्रोसेस comprises of hydrocarbon and ammonia, N2H2 and CO, natural gas, carbon monoxide and nitrogen, या CO and H2। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, हाइड्रोकार्बन एंड एमोनिया। Active gas in carbonaitriding process comprises of hydrocarbon and ammonia. Next, in flame hardening process for steel, the surface become hard, core remains soft and tough. Objects are heated by an oxyacetylene flame, या all ABC। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, all of above। In flame hardening process for steel, the surface become hard, core remains soft and tough. Objects are heated by an oxyacetylene flame. Next is the heating time in flame hardening of steel is y square, या 33y square, या 7y square, या 100y square, where y is equals to depth of the hardened layer in millimeter। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 7y square। The heating time in flame hardening of steel is 7y square। Next, hardening temperature in induction hardening of medium carbon steel is about 10 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 750 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड।
Hardening temperature in induction hardening of medium carbon steel is about 750 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, induction hardening of steel avoid the danger of overheating, burning of surface as may happen in flame hardening. Yeah, may be applied for both surface hardening and full annealing by heating with an alternating magnetic field. SC is flowed by quenching at D, all of above. इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ above. Induction hardening of steel avoid the danger of overheating, burning of surface as many happen in flame hardening. C may be applied for both surface hardening and full annealing by heating with an alternating magnetic field. C is flowed by quenching. Next, which of the gas hardening process cannot be adopted for steel having less than 0.4% carbon? Carbonitrating, इंडक्शन हार्डनिंग, साइनाइडिंग या नन ऑफ दीज? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंडक्शन हार्डनिंग. Which of the gas hardening process cannot be adopted for steel having less than 0.4% carbon? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंडक्शन हार्डनिंग. नेक्स्ट इज typical steel parts hardened by induction hardening include piston rod and pump shaft, spur gear and crankshaft and camshaft या डी, ऑल एबीसी? इसका सही आंसर है ऑल ऑफ above. Typical steel part hardened by induction hardening include piston rods and pump shaft, B, spur gear and cam, C, crankshaft and camshaft, all of above. Next, which of the following steel components are flame hardened? Teeth of gears and shaft, mill roll and spindle, या valve stem, open in wrenches, pulley and worm, या डी, ऑल एबीसी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ above. Which of the following steel components are flame hardened? Teeth of gears and shaft, mill rolls and spindle, valve stem, open in wrenches, pulley and worms, all ABC? इसका सही आंसर है ऑल ABC. नेक्स्ट है दोस्तों, साइनाइडिंग प्रोसेस ऑफ गैस हार्डनिंग ऑफ स्टील इज यूज्ड फॉर स्क्रू, नट एंड बोल्ट एंड स्मॉल gears, plain carbon or alloy steel containing less than 0.20% carbon, या those parts which are subjected to relatively light load and require improvement in the surface wear resistance, या डी, all of above? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी. क्या बोल रहा है? साइनाइडिंग प्रोसेस ऑफ गैस हार्डनिंग ऑफ स्टील इज यूज्ड फॉर स्क्रू, नट एंड बोल्ट्स एंड स्मॉल गियर्स, बी, प्लेन कार्बन और एलॉय स्टील containing less than 0.20% carbon, सी, most parts which are subjected to relatively light load and require improvement in the surface wear resistance. इसका सही आंसर है ऑल ऑफ above. Next, hardenability of steel depend upon the dash of the steel. इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ above. Hardenability of steel depend upon the dash of the steel, quenching medium and method of quenching, composition and method of manufacture, C, section. इसका सही आंसर है ऑल ऑफ above. Next, hand filled manganese steel containing dash percentage manganese. इसका सही आंसर है 12 से 14%. hand filled manganese steel containing
12 से 14% मैग्नीज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज हैंड फिल्ड मैग्नीज स्टील हैज़ ए वेरी हाई रेसिस्टेंस टू वेयर, is used for railway point, rock drill and stone crusher. B, C both A and B, या D neither A nor B। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ A और B। hand-filled manganese steel has a very high resistance to wear, is used for railway point, rock drill and stone crusher. Next is tool steel should be first hardened and then normalized, temper, anneal या cool। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, tempered। Next is the purpose of tempering is to obtain greater hardness, softness, brittleness, toughness। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, toughness। Next, in tempering tests take place in 2 stages, heating, cooling या both A and B या D neither A nor B। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कूलिंग। इन tempering cooling take place in 2 stages। Next is in solid solution of carbon in gamma iron is the test phase of steel, cementitic, austenitic, pyrolytic या ferritic। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, austenitic, ऑप्शन बी। The solid solution of carbon in gamma iron is the pyrolytic phase of steel। Next is the steel while hardening by heat treatment becomes too brittle due to benite, perlite, martensite या cementite। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, martensite। The steel while hardening by heat treatment process too brittle due to martensite। Next, heating the steel above upper critical temperature and then cooling in air is the process of annealing, normalizing, tempering या hardening। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, normalizing। Heating of steel above upper critical temperature and then cooling in air is the process of normalizing। Next, the supersaturated solution of carbon in dash iron is known as martensite। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, अल्फा। The supersaturated solution of carbon in alpha iron is known as martensite। Next, heating the steel above critical temperature and then slowly cooling it in a furnace is the process of hardening, annealing, tempering, normalizing। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, annealing। Heating the steel above critical temperature and then slowly cooling it in a furnace is the process of annealing। Next is quenching of heated steel in both imparts of tempering, hardening, tempering या as hardening। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, hardening। Quenching of heated steel in both imparts, hardening। Next, drawing of dash from the tool is tempering, carbon, strain, stress या both B and C। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, strain। Drawing the strain from the tool is tempering। Next is since the atomic spacing in crystal are of the order of a few angstrom, the crystal structure of metal are studied by ultrasonic method, X-ray technique, electron microscopy या डिफ्यूजन टेक्निक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी,
X-ray technique. Since the atomic spacing in crystal are of the order of a few angstrom, the crystal structure of metal are studied by X-ray technique. Next is the temperature of crystallization is the temperature at which a metal must be heated to dash new strain-free grains decompose from and grow precipitate या orient. इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फॉर्म एंड ग्रो. क्या बोल रहा है? द टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द टेम्परेचर एट व्हिच ए मेटल मस्ट बी हीटेड टू फॉर्म एंड ग्रो न्यू स्ट्रेन फ्री ग्रेन. नेक्स्ट, among the non-ferrous group, dash is the best for forging and press working. Brass, magnesium alloy, duralumin, aluminium, bronze. इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, duralumin. Among the non-ferrous group, duralumin is the best for forging and press working. Next, precipitation is a and dash process for steel. इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, none of these. Precipitation is an alloying, tempering, softening या none of these for process steel. इसका सही आंसर है none of these. Next, dash diagram is a fundamental importance in heat treatment process. Iron carbon equilibrium, decarbonization TDT, continuous cooling ट्रांसफॉर्मेशन. इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम. डैश डायग्राम इज ऑफ द फंडामेंटल इंपॉर्टेंस इन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस. इसका सही आंसर है आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम. नेक्स्ट इज रियल क्रिस्टल generally have defect. Dislocation is a dash defect, line, point, interstitial या surface. इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लाइन डिफेक्ट. रियल क्रिस्टल generally have defect. Dislocation is a line defect. Next, in twine defect, the crystal structure to the left and right of the twine plane are mirror image of each other. Twine formation occur by plastic deformation, mechanical twine, annealing या सी, both A and B या D, neither A nor B. इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, both A and B. In twine defect, the crystal structure to the left and right of the twine plane are mirror image of each other. Twine formation occur by plastic deformation and annealing. तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद.